नमस्ते, मैं हूं प्रतिभा जी। वेलकम टू साइंस एक्सप्लोरर ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस। मेरा आज का टॉपिक है पोल्यूशन। जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एजेंडा है, अच्छा है, होना भी चाहिए। इसके लिए पक्ष और पक्ष दोनों को थैंक्स होगी, क्योंकि पोल्यूशन जैसे टॉपिक पॉलिटिकल एजेंडा बनते ही नहीं है। उम्मीद है कि पोल्यूशन पर राजनीति लोगों को अवेयर भी करेगी। पोल्यूशन जो कि हमारी लाइफ और हेल्थ से सीधे तौर पर जुड़ता है, लेकिन लोग पोल्यूशन के बारे में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। तो मेरी ये वीडियो पोल्यूशन के बारे में अवेयर करेगी, साथ ही पोल्यूशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन भी करेगी। मेरे नोट्स क्लास में 3 ही नहीं बल्कि 10 तक के स्टूडेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए डिफाइन करते हैं पोल्यूशन। Pollution is any undesirable change in physical, chemical or biological characteristics of air, land, water or soil. Agents that brings about such changes are called pollutants. Now, types of pollution. First is air pollution. Second is water pollution. Third is radiation. Fourth is noise pollution. Fifth is soil or land pollution. अब हम एक एक करके सभी पर डिस्कशन करेंगे। इसमें एयर पोल्यूशन सबको डिफाइन करेंगे, साथ ही के सोर्सेस क्या हैं और कंट्रोल मेजर्स और रेमेडीज़ क्या हैं, उनके भी डिस्कशन करेंगे। एयर पोल्यूशन। Air pollution is the introduction of harmful materials to Earth's
atmosphere, causing damages, disease, and death to living organisms. Industry and transport are the largest sources of air pollution. Air pollutants can be either gases or aerosols. Aerosols कहते हैं particles or liquid droplets suspended in the air. They change the natural composition of the atmosphere and can cause damage to natural water bodies and the land. थैंक्स व्यूअर्स। आगे का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूँगी सोर्सेस एंड रेमेडीज। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कैसी लगी वीडियो।